सलामुअलैकुम डॉक्टर तजीन, आप सॉरी आपको वेट करना पड़ा आज माशाल्लाह। कोई बात नहीं। मैं तो इतना एंजॉय कर रही थी, वो सुन रही थी पूरा लेक्चर, अच्छा। एंड हाँ आई नहीं, वाज थिंकिंग दैट probably it's very much important हाँ for all the डेली students to डेली relate. प्रॉब्लम थे। हाँ, सर्वाइकल I स्पॉन्डिलोसिस, know. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज सो कॉमन। Oh yes, oh yes. हर वक्त So that's कंप्यूटर why के I सामने। kept quiet. I thought कि biostats, फिर मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी कि यार biostats is also something that हाँ people are हाँ often afraid of it. तो फिर उसकी मुझे फिर that's why when you called I said चलो now I have to jump in हाँ। definitely. नहीं अच्छा नहीं लग रहा था ना कि मैंने कहा आपको इंतजार करना पड़ा है। I know it's absolutely fine, क्योंकि हाँ। जब एग्जाम्स करीब होते हैं तो हम हम्म। स्टूडेंट्स की एंजाइटी को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होते हैं, तो नो इश्यूज, आई कैन दिस इज टुडे इज द कंप्लीटली एंड ऑफ द अंडरस्टैंड। सेक्शन, तो अब वो जितना उनको फायदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, हम्म। it's very much important. So should I start? Do नहीं we have all? हाँ जी स्टार्ट कर Yes, लें। ma'am. ठीक आई है, थिंक do you can you hear my voice clearly, all of you? Yes, ma'am. I think it's okay. There's no Yes, distortion. ma'am. Clear. Okay, what about now? Can you hear it very clearly now? Yes, ma'am. It's मैम clear. क्लियर है। Great, fine. Okay, so I was really thinking that what should I be teaching you, that whatever is coming in your exam. So usually what comes in your exam is about the overall understanding of the biostatistics, type of data, measure of central tendency. They do usually talk about mean, mode, median, and then they talk about measures of central dispersion, in which they talk about range, variance, standard deviations, and they often talk about the chi-square. And I was also thinking that other than your exam, what are you going to use in your thesis? So in your thesis, you usually do not develop your model or something. You basically just go for the comparison with the chi-square and then conduct your measure of central tendency and dispersion. So I thought that I should keep 2 sessions for you, but if there is a need in future, we'll see what need to be done extra, right? So far, my understanding is whatever we are going to cover today would be enough for you, for your exam and for your thesis, right? So this is just the understanding. Can somebody tell me, what do you understand? What is the difference between of population and sample? Anyone? Don't even raise hands, say it. Anyone? मैम पॉपुलेशन लिविंग थिंग होते हैं, सैंपल कैन नॉट बी लिविंग थिंग। Okay, anyone else? Population is a total number, and samples from that total number you take something, take out to select someone. I mean, like a group kind of that. Yes, absolutely. Anyone else? Sample is a part of the population and population is the whole. Is the whole. So if we just talk about Pakistani women of age 50 plus, right? So that's our population. And then whatever sample we are digging out or picking it up from the population is definitely our sample, right? So then Pakistani 50 plus women living within Karachi could be a sample, right? And usually when we talk about the estimates का मतलब यही है कि हम estimates को generalize करने वाले हैं population में. We do not have that much budget to be able to get done population-based studies, right? So we will do community-based studies using the sample. और sample में जो estimates हम निकालेंगे, चाहे हम mean, mode, median, prevalence, हम जो भी निकालते हैं, we are going to generalize on our population, right? So population is very much important and you should know what is your population. And sometimes we talk about target population and then we talk about sample. जब हम target population का word लाते हैं, what we are saying here, that population means that entire Pakistani women 50 plus, target population entire Karachiites, women 50 plus, because our sample is going to be picking up from the Karachiites. But this doesn't mean that we are not going to generalize the sample to the entire Pakistan, okay? So this is the difference between our population and sample. Sometime in Viva,
some of the people do ask this question. So some of them have faced this question also. Okay, now we have two more definitions, parameters and statistics. Any comment on that? What do you think about what is the difference between of parameter and statistics? Chale, I'll tell you. When I'm saying census, when I'm saying full population you have taken, whatever prevalence you are going to measure, that's the parameter. Okay? Which is coming out from the population, which is coming out from this population, right? Parameter is coming out from the population. And when we are saying sample is coming out, statistics is coming out from your sample. Got it? So when we are saying that the average household size in Pakistan, when we are saying mean age of the women, when girls, when they are getting married, so these are all these statistics, and statistics need to be generalized on the population. और population का जो generalization हम करते हैं वो इसलिए कि we have shortage of money often. You and I, हमारे पास अक्सर का पैसे नहीं होते ना, and you all are the kind of residents and students. It's difficult for you that you get done parameter. You just dig out a parameter. बेहतर यही है कि you dig out a statistics which can be generalized on the population, right? Okay, so now there are other two important terminologies: descriptive and inferential statistics, right? So what, any idea what is descriptive and what is inferential statistics? इतनी खामोशी रखोगे तो कैसे जवाब दोगे वहां पर वाइवा में? You should be very quick. मैम नहीं पता क्या होता है. Okay, कोई बात, no issues. Descriptive, see the word, look at the word descriptive, describing, isn't it? Describing. So if I'm having something in my hand, you will try to describe, right? The rectangular, right? Color is black, having a, orange and pinkish screen in front. So you are describing something, right? So whenever you describe, so that is called descriptive statistics. But whenever you are comparing two, that's your inferential statistics, right? So whenever you have to compare my teaching with some other faculty's teaching, so here you are comparing. So that's what inferential statistics. You are inferencing out of it, right? And whenever you talk about describing, so you are only describing one population, right? For example, we are describing the women who are 50 plus in Karachi. So you describe that most of the women who were ready to participate in our study were in the range of 55 to 65, right? Women refuse after 65, women refuse before 55. So this is description. So only one group. So one thing you are going to describe. You try to tell that all those women love to color their hair with red dye, all those women love to go for walking. So your denominator is always one group. Okay, so you are describing. So this is called your descriptive statistics. When you talk about inferential statistics, where you have to compare, so you will compare that all those women greater than 50 and lesser than 50, right? So you try to compare both of them. So greater than 50, 10% of the women greater than 50 years of age would like to go for walk. However, less than 50 years, all of them would like to go for a walk. So you are kind of comparing two different groups or two different things over there. Got it? So this is the difference between of descriptive and inferential. So you can read what I have written over there, that they are concerned. They are concerned with the presentation. You can put the organization by summarizing the data. And by the end of a lecture, I'm going to show you how you could summarize the data, right? And then graphical representation and tables would be there. So that's all your descriptive statistics. Then you will jump into inferential statistics. Allow us to generalize. अब देखो, जब हम ये बात करते हैं ना कि
50 साल से ज्यादा औरतें और 50 साल से कम औरतें क्या कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, हम बात कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, राइट। और इट इज कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस, और यहाँ पर आप हाइपोथेसिस लगाते हो, जो कि आई एम गोइंग टू टीच यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, काई स्क्वायर कैसे लगाते हो, उसका आप हाइपोथेसिस बनाते हो, एंड देन यू ट्राई टू टेस्ट वेदर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। अब देखो एज प्लस 50 वाले सिर्फ 40% औरतें वॉक पे जा रही हैं, बट एज 50 से लेस वाले सारी औरतें जा रही हैं, तो डिफरेंस नजर आ रहा है ना। But at one place you could see it is 100%, in another place you can see that it is like, in one place you could see it is 100%, and in other place you could see it is 40%. So one could see a great difference over there, isn't it? बहुत ज़्यादा difference नजर आ रहा है. When you have a great difference over there, it's mean that it is going to be statistically significant difference, which I'm going to teach you by the end of the lecture, right? Not now, right? So, and then if as soon as you finalize that what is descriptive inferential, you can move ahead. And let me be very honest with all of you will be using descriptive and inferential statistics in your thesis. You have to do your synopsis and then you have to use this, right? Okay, so now there are some research questions for you. I want all of you to be very active now, okay? So how effective is a new vaccine against the breast cancer? So when you have to check for the effectiveness of your drugs or vaccine, तो क्या करते हो? कैसा टेबल करते हैं? Statistics करेंगे, कौन सा नंबर वाला? ऑफ केस Yes, trials करेंगे. absolutely right. And what do you do in trials? You always have two groups, isn't it? Yes, ma'am. Right? When you have Yes, two ma'am. groups, yeah. So when you have two groups, which kind of statistics you will Normal and diseased. yes, Differential. inferential. Excellent. Now look at the second question. How effective is the treatment that seeks to reduce the risk of stroke? Now we are comparing two different treatment of stroke, right? So what statistics you are going to pick? Inferential. Inferential, excellent. Now, look at this one. What is the prevalence of osteoarthritis in a rural community? Population. No. Description. Excellent. Descriptive. You cannot use inferential because here you are only talking about a rural One community. group. Exactly, one group. So it is one group, right? Excellent. So this is what you need to understand, that when are you going to use the descriptive statistics and when are you going to use the inferential statistics, right? मैम breast vaccine वाले के लिए क्या इस्तेमाल होगा? Inferential. Because the Differential. effective, देखो, जब हम कह रहे हैं effectiveness का word, how would we know that it is effective? So you need to pick up 100 women who will not be given this vaccine, and you will pick up 100 women who will be given this vaccine, isn't it? And then you try to see the women who received the vaccine, whether it was they were having less onset of breast cancer as comparative to those women who never received the vaccine. So you are going to compare. You are going to compare. Remember that. So that's your effectiveness. So effectiveness, impact, these things always be compared in two groups. So that's your effectiveness. And then when you talk about the prevalence in our community, the mean in our community, the mode in our community, the median within the community, that's your one thing, one group. So that's your prevalence, or it really we have to see, but that is your descriptive statistics. Okay. Now look at this one. Whenever we talk about statistics, we are saying it is descriptive, it is inferential. And then, as I told you earlier, inferential could be hypothesis testing, and then it could be estimation. अब ये mean, mode, median जो मैं बता रही हूँ ना, ये estimation है, और जब मैंने chi-square कहा है ना, वो आपका hypothesis testing है, right? So your estimation is mean, mode, median, in which point estimate is mean, mode, median, and interval, confidence interval भी निकालते हैं हम,
right? So mean, mode, median with confidence interval with the hypothesis testing, right? And when we have hypothesis testing, we also have confidence interval over there. Of course, we do have, and we also put our confidence interval, but not always, right? Because I know FCPS thesis doesn't require too much of analysis in it, so too much of stats is not required, but you do have to do something, right? Okay, now another one which is very important, the difference between of variable and data. I remember one of my friend who's conducting exams, she always tell me that whenever I ask them a question about variable and data, they always get confused. So you don't have to get confused now, because I'm going to tell you now. So when you talk about variable and data, the difference between it, look at the word variable, the word variable, right? So age, you and I are having different age. You and I are having different genders, isn't it? You and I are having different blood pressure, different weight, different HB level, whatever it is. So it's a variable. Everything is different, you know. So it's a variable. So age is a variable. Hemoglobin level is a variable. All these things are variable. When you talk about data, data is the value which you are going to get. For example, I am saying I'm 50, so that's my value. If you are saying I'm 30, that is your value. If someone is saying this person is 35, that's the value, right? So age is the variable, and the value within the age is your data. Got it? That's your data. So you have to remember that, the difference between of variable and data, right? Then another difference is survey and experiment. People often mix these two words. Survey कर देंगे और फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे कि हम intervention करने जा रहे हैं. So you need to have a very clear understanding what is a survey and what is an experiment, right? Survey is an observation. You just go at the community or the patients who are coming in your setting, wherever you are working, doing your residency, just ask a different question from them. And then if you, as soon as you come to the, come up with some kind of analysis, that is your survey. So your methodology is survey actually, right? When you are talking about experiment, it's mean that you are doing something. For example, when you look at the drug effectiveness, when you look at the vaccine effectiveness. So when we're comparing and you're doing some kind of intervention, sometime in some of the experiment, you don't compare. Sometime it's a pre-post design. You compare pre-post. That's a different thing. हम अक्सर ऐसा नहीं करते. पहले हम उसका हीमोग्लोबिन लेवल लेते हैं, फिर उसको हम कोई थेरेपी से गुजारते हैं, फिर बाद में दोबारा उसका हीमोग्लोबिन लेवल लेते हैं और we try to see कि difference आया था कि नहीं आया था, right? That's the experimental study design. Compare तो हो रहा है ना before and after. So inferential statistics often come with the experiment, right? Remember that. But इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे में आप inferential कर नहीं सकते. अगर सर्वे में yes, go ahead. मैम इट्स लाइक एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है, सर्वे और एक्सपेरिमेंट मेथड. Yes, एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है और एक इंटरवेंशन है. ओके मैम. सर्वे इज योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज योर इंटरवेंशन. ठीक है? Okay, so now this is very important for you. All of you should pay attention. We are very, very simple concept. And then, but the most important concept, right? अब जब हमने पिछले बात की variable and data. Variable is the age of a woman, or variable is the gender of the population. But we talked about data. So data value, I'm focusing on the values right now. Okay. Now, some of the values coming in our hand is qualitative in nature, and some of the values are quantitative in nature, right? When we are saying it's a qualitative in nature, nominal and ordinal are the important type of data over there. And when we are saying quantitative data, interval and ratio are the type of data we are talking about. Can you see this yellow highlight line is showing us that that it is increasing, right? It is increasing complexity. These are the simple one, and then slowly and slowly from there to there, the complexity is basically increasing, right? So now I will tell you what am I trying to say, what is complexity, right? I'm going to talk about it. Okay. Okay, so
when we are saying qualitative variables that we are giving the value of numbers to some of the things. Now, look at your ID card. It is having numbers. Look at your employee number. It is having numbers. Look at your FCPS numbers. These are all numbers, but these numbers are not numbers. They are just look like a number, but they are not actual numbers. They are having some kind of characteristics attached with it, isn't it? Like when I'm saying I am 50, it's mean that it's a number. I am 50 years old, right? But when I'm saying that I am 2244911, so that's my ID number. So that's not the actually number. It's a characteristics given to it. Okay. So when we talk about stages of cancer, oh, this patient is in stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So we know the meaning of it. So that's a qualitative variables, right? When we talk about occupation, that this person is the dentist, this person is the neurologist, different things and all. So this is occupation, and we try to give some numbers to the occupation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these are numbers, but these numbers are just the characteristics, nothing else. Sex or gender, we often say that male is 1. Often we say this male is equal to 1, and often we say that female is equal to 2. Right? This doesn't mean that female is twice stronger than the men. No, we are not saying that. This doesn't mean that men is on a priority top of the women. No, it's just the characteristics given to them. Right? So that's the gender. Then marital status, married, unmarried, widow, and single, whatever. So we just give them the numbers. Educational status. Now it is really very much different when we are saying educational level. How many years of schooling you have completed? Then a different story, right? Then it is having a number. So I have completed 5 years of schooling. I have completed 20 years of schooling. I have completed 25 years of schooling. So that's actually value. So that is basically quantitative, not qualitative. But when we are saying educational status in a categories, primary, secondary, intermediate, or O levels, A levels, whatever, undergrad, BA, masters, PhD, postdoctorate, we try to give them some numbers. We often say that when a person is primary education, so we try to give them 1. If somebody is secondary education, we try to give them 2. If somebody is intermediate, we try to give them 3. This is how we do it. So we keep on giving the numbers, but these numbers are only characteristics. This number is having nothing in it, right? So always remember that. Okay. So what you need to understand, that qualitative variables mean that you only give the value for some kind of characteristics, right? Quantitative means the actual value. If I'm saying my child is 0 years of age, so it means my child is a newborn, less than 1 year, infant. If I'm saying my child is 20 years of age, it means my child is at 20 years of age, isn't it? So that's quantity. Actual quantity is given. Monthly income. I am earning 5,000 a month. I am earning 15 lakhs a month. So that's my earning. Age, blood pressure, the actual values. And then we could also add educational years. The one we could also easily over here, educational years, right? So that can easily be done. If I have to put educational years, so I will say educational years, right? And here when I'm saying education level in categories. So things would be much easier then. Then I can just say that then one could say that it can become. Similarly, blood pressure is quantitative, the systolic and diastolic. But as soon as you call it low blood pressure, high blood pressure, that becomes your qualitative. Okay. So remember that it's important for you to understand in biostats concept, right? Okay. So what is nominal and ordinal scale? Qualitative है, अभी हमने देखा. Nominal ordinal है, ठीक है. Qualitative है, हमने देखा. अब nominal, word nominal, हम अक्सर यूज करते हैं ना, nominal सा amount दिया है जी मुझे, छोटा मोटा सी बात है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है. So it's mean that आपके लिए कोई value नहीं रखता. तो it's mean that whatever number you have given over there, उसकी कोई value नहीं है, right? So give any number. Zip code दे दो, 3500 है कराची का, 7400 है कराची का, whatever.
Smoking status दे दो, yes or no, 1 and 2 दे दो, doesn't matter. It doesn't make any difference. Marital status 1, 2, 3, 4 दे दो, eye color सबके अलग-अलग numbers दे दो. Number means nothing. जब हम class sections बनाते हैं A B C D हम कर देते हैं, but some of the parents want their children to be in section A and they often tell इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. A B C D हमने सिर्फ इसलिए रखा है according to हम combination करना चाहते थे, male female this and that and all, but all 4 of them will take the same classes, but then parents नहीं A section में डालो, A section में डालो, because किसी जमाने में कुछ schools ऐसा किया करते थे, A section में best students जाते थे, B में उससे कम बेस्ट जाते थे, C में उससे कम और D में सबसे डफर्स जाते थे मेरे जैसे. So then the people used to think that A are the best, so our children should go, but nowadays they have taken it out, this criteria. So but identifiers उसमें चूके लग गए हैं हमारे, तो people think जहां पर उनके दिमाग में कुछ भी चीज आ सकती है, that's nominal. Got it? So that's nominal. Now what is ordinal? Ordinal is also pretty similar, that it has no value. उसके numbers की कोई value नहीं है, कोई भी importance नहीं है, but people still take it in that way. So ordinal means some kind of order could be seen, because like that, as I just showed you earlier, primary क्या था 1, secondary क्या था 2, intermediate 3, BA 4, masters 5, PhD 6, postdoctorate 7. If you try to give that kind of number, one could clearly see that there is some kind of increasing trend or decreasing trend. If you pick up the socioeconomic status, हम ये कहते हैं ना, लो socioeconomic status को belong करते हैं ये लोग, middle को करते हैं, upper को करते हैं, उसमें हमारे brain काम कर रहा है, हमारी अपनी judgment काम कर रही है. So this means that वो qualitative variable है, but it is in some kind of order. Rank in army, अब now people are saying अब rank in army है, they are a captain, sub-captain and all those kind of stuff, brigadier or whatever, they try to give some kind of ranks, right? But वो उनके brain में ही है ना, rank wise तो उनका age different नहीं है, size different नहीं है, कोई number की value नहीं है, right? And youngers can reach to that level, and very old people sometimes army से 50 में ही वो retire हो जाते हैं, major के साथ ही वो promote ही नहीं होते. Faculties rank देख लें, बहुत सारी फैकल्टीज असिस्टेंट प्रोफेसर में रिटायर हो जाती है, बहुत सारी फैकल्टीज प्रोफेसर बनने के बाद बहुत यंग एज में प्रोफेसर बन जाते हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट वी यूज आवर ब्रेन टू जज एंड टू थिंक एंड ऑल. सो दैट इज योर qualitative. So this is your nominal and ordinal, what I was talking about. Okay, so this is all qualitative. जो भी numbers आपने दिए हैं उसकी value कोई नहीं है, उसके अंदर आपके you are looking at characteristics and all those kind of stuff and all. Then you talk about quantitative variables. When you quantify, your numbers are having values, right? आपकी salary 10,000 है, मेरी salary 10 लाख है. The difference is quantifiable, and then it is brain की सोच कुछ भी नहीं है. जो पैसे मेरे पास है वो है, जो अगले के पास है वो है, something like that. So that is quantifiable. Then we have two different forms of variables in it, data in it, interval and ratio. अब हम ये देखते हैं कि what is interval and what is ratio. Very simple concept. सबसे ज्यादा अब तक, क्योंकि I teach in the different students, and then I notice कि अगर वो उसको समझते हैं कि वो मुश्किल है तो वो मुश्किल है. अगर they just keep it in their mind, बहुत simple concept है, तो they'll understand. Listen to me carefully and you are with me, right? When we are saying interval scale, right? First of all, scale को समझो, ठीक? Scale में क्या होता है कि एक value होती है ना, when we always have a scale, क्या होता है? एक बिल्कुल exact हमारे inches होते हैं, whatever centimeters, और उसके अंदर बिल्कुल exact numbers होते हैं, right? और बिल्कुल space में तो बन नहीं रहा मुझसे भाई, sorry. और similarly this. So what I'm trying to tell you, that scale होता है, कुछ proper thing होती है. We really cannot say कि this is not a scale, right? Exactly, space भी बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल perfect होती है, और numbers अगर in between centimeters 12 आ रहा है तो 12 ही आ रहा है, 20 आ रहा है तो 20 ही आ रहा है, तो scale is that. So we both of them is having scale. Now pick up the example of age, right? So when I'm saying this person is 20 years of age and this person is 35 years of age, right? So age 21 से 22 तक और 19 से लेके 20 तक, you have exactly 12 months difference, isn't it? Right? And similarly, when I'm picking up
33. So 32 से 33, 33 से 34 में exactly 12 months का difference है, right? So it's mean that your age is a continuous variable. It is the quantitative, and it is based on the scale, right? This is based on the scale. So you need to understand this is what scale is, right? Okay, and then interval scale and ratio scale, right? Ratio is so simple. हम क्या कहते हैं 1:2 के रेशो पे चल रहे हैं अब हम. The doctors, male and female doctors are 2:1 ratio. So males 2 हैं और female 1 ही है. इसी तरह हम बात करते हैं ना that all the students who have enrolled within the MBBS program, so we are having 1:1 ratio. It's mean that 50% of the class are females, 50% of the class are males, right? So it's mean कि जो उसके अंदर zero है ना, जब हम बात करते हैं zero, it's mean zero ही है. The zero is the absence of the characteristics. अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई रेशो नहीं है, everyone is male or everyone are the females, so इसका मतलब ये होगा दूसरे zero हैं. तो ratio scale means कि zero ही है. If I am saying my height is 0, it's mean I have no height. If I am saying my weight is 0, it's mean I have no weight. If I am saying my ST depression score is 0, it's mean that I have no depression. If I am saying my ECG, is in mm of this, it's mean I have no problem with the heart and all, right? So 0 means 0. So that's your ratio scale. 1:4, 5:4, we often talk about it because 0 is 0, right? Now, interval scale में जो 0 होता है ना, वो बहुत नीचे जाकर होता है या बहुत ऊपर जाके होता है, right? अब देखो when you are getting done your यहाँ से जब आप उसका करते हैं कार्डियक का CVI measurement करते हैं, right? तो उसमें 0 आपका कहाँ पर आता है? 0 आपका बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होता. 0 is somewhere in the middle, right? If you are giving a birth of a baby, when a baby is moving from the uterus, reaches to the pubis, at that time you call it a 0 point, right? जब के बच्चा जब निकलना स्टार्ट हुआ तो फिर 0 वो होना चाहिए था, वो तो 0 नहीं है. Pubis is your 0, isn't it? Look at the example of a temperature. Temperature 0 पे कभी भी बर्फ नहीं होती, right? बर्फ कभी भी नहीं होती. So what happens? बर्फ कब बनती है? जब वो बिल्कुल माइनस में किसी पॉइंट पे जाता है, right? So that is your 0, right? So I'm sorry. My mobile is reminding me that it's a namaz time. So let's see how much we will finish. So that's your 0, right? So usually 0 is always arbitrary. At the point of 0, वो 0 नहीं होता. Absence उस वक्त नहीं होता. Absence वो बहुत देर से जाकर होता है. जैसे for example temperature है, तो freezing point would be 32, below 32. So that's your 0. 0 पे 0 नहीं थे, 0 पे तो हम और आप आराम से जी रहे होते हैं, हमें मसला ही नहीं होता. कभी कभी हम अपने बस थोड़े से हल्के कपड़े पहन लेते, बट जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट पे जाता है, all of us wear all kind of buffalo stuff and all to be able to protect us, right? So interval scale को ऐसे याद रखें. स्केल तो डेफिनेटली है, लेकिन इंटरवल का मतलब ये है कि 0 आर्बिट्रेरी है. रेशो से याद रखें, रेशो में 1:2 याद रखें, उसमें 0 means 0. That's it. अगर आपने ये याद कर लिया, you are 100% fine with it, right? Okay, another one is which you need to understand is discrete scale and continuous scale. आपने सुना होगा, मैंने थोड़ी देर पहले एज को continuous scale बोला, right? अब height continuous scale है, weight is continuous scale, blood pressure is a continuous scale, your sugar level is continuous scale. When HB level देखते हैं ना, HbA1c नहीं, HbA1c नहीं, वो तो फिर आपका HbA1c basically is your qualitative, not quantitative. क्वांटिटेटिव जब आप शुगर लेवल एक्चुअल देख रहे होते हो, कितना उनका रैंडम आ रहा है और कितना उनका जो है वो फास्टिंग है. When you look at the actual level के 180 है, 170 है, 110 है, whatever it is, right? That's your continuous, right? तो अब what is the difference between discrete and continuous? Discrete is number of children, right? Number of women who are having first parity, number of teeth, right? हम ये नहीं कह सकते इसका 1.5 teeth है, इसकी 1.5 आंख है, ये लोग 1.5 लोग हैं. We can't say that. We always say 2 लोग हैं, right? So whenever you cannot really divide them into small bits and pieces, that's your discrete scale. But it is for, of course, it's your continuous ratio scale में जाता है ये.
but you cannot really divide them, right? So it's a discrete number of children. मैं ये तो नहीं कह सकती ना मेरे 5.5 बच्चे हैं. अब वो अपनी प्रेगनेंसी मिला रहे हैं तो प्रेगनेंसी तो जेस्टेशनल एज है ना, नंबर ऑफ बच्चा तो नहीं है ना, वो अभी तो जेस्टेशनल एज है. सो यू रियली कैन नॉट कंबाइन इट टुगेदर. सो डिस्क्रीट इज हैविंग नो मिडिल पॉइंट्स बट कंटिन्यूस हैविंग योर मिडिल पॉइंट्स और एग्जैक्टली सेम होंगे, वरना स्केल कैसे होगा? स्केल होने के लिए तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स होने चाहिए. सो दैट्स दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस व्हिच यू ऑल शुड नो, राइट? चलो क्विकली सब लोग अपने माइक्स खोल दो. ओपन योर माइक्स नाउ. क्विकली टेल मी, when I am saying ICD-9 classification, 0 to 9.5 is equal to organic psychosis, 0 to 9.6 is equal to depression. ये क्या है? सबसे पहले बताएं, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? Quantitative. क्वाली कह रहे हो, क्वांटी कह रहे हो? Quantitative. Quantitative है ये. अगर ये क्वांटिटेटिव है 0 to 9.5 का मतलब फिर क्या है? Qualitative. है भाई ये तो ब्रेन से सोच के रखा है ना उन्होंने, जिन्होंने कैटेगरीज बनाई है. इसका कोई मतलब थोड़ी है. ये कोई हमारी कोई इंटेलेक्चुअल साइंस नहीं है कि कोड आ गया हम कह रहे हैं 0 to 9.5 है, ओके 2 को 5 से प्लस करेंगे, 9 को 5 से करेंगे, सब. नो, ये तो सिर्फ उन्होंने अपने एक क्लासिफिकेशन कोड आपको बना दिया. तो ऐसे इसमें कोई वो नहीं है कि बॉडी का कुछ मेजरमेंट किया था, समथिंग, नथिंग, जस्ट डायरेक्ट कोडिंग बीन डन. सो क्वालिटेटिव है, क्वांटी हो ही नहीं सकता. Yes, ma'am. कॉली है ना. अब कॉली में कौन से ऑप्शन से? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. सो डू यू थिंक नॉमिनल या ऑर्डिनल? ऑर्डर कुछ नजर आ रहा है क्या? नॉमिनल. थैंक यू. तो दिस वन इज योर क्वालिटेटिव. मैं कॉली में जो है ना वो रख रही, एल लिखती हूँ, एंड दिस इज नॉमिनल. ओके, चलो नेक्स्ट करते. फीवर क्वांटी है, कॉली है? हाँ, फीवर क्वांटिटी है. शाबाश, गुड 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 गुड, अच्छे बच्चे हैं भाई. आगे, और ये क्या होगा? रेशो स्केल होगा कि इंटरवल स्केल होगा? 0 क्या है? Interval. 0 आर्बिट्रेरी है फीवर में. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट. फीवर और टेम्परेचर एक साथ जाता है. शाबाश. चलो सीरम पोटेशियम लेवल क्वांटी है, कॉली है? Quantitative. शाबाश. चलो क्वांटिटेटिव है, मान गए. अब ये बताओ मुझे कि रेशो स्केल है कि इंटरवल स्केल? शाबाश. रेशो अब स्केल अब रेशो. अब बताओ कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है? कंटिन्यूस कंटिन्यूस है. शाबाश. क्यों? क्योंकि मेजरमेंट्स है हमारे पास और इक्वल है, राइट? वेरी गुड, एक्सेलेंट. नाउ पेन स्कोर. क्वालिटेटिव. वेरी गुड. क्योंकि हम 0 to 5 तो हमने वैसे ही रैंडमली दे दिए ना, हमने कोई इसमें कोई इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशन तो नहीं की थी, राइट? सो 0 to 5 क्वालिटेटिव. चलो अब बता दो नॉमिनल के ऑर्डिनल. Ordinal. ऑर्डिनल. ऑर्डर नजर आ रहा है ना? 0 1 2 3 4 5 ऑर्डिनल हुआ ना बेटा? ऑर्डिनल हुआ ना? ठीक है. Okay, ST depression on the ECG measured as less than 1 mm, 1 to 5 mm and greater than 5 mm. Ma'am, discrete है. नहीं बेटा, डिस्क्रीट कैसे? 3 कैटेगरीज है ना. क्वालिटेटिव है, अच्छा, ओके. राइट? क्वालिटेटिव है. नॉमिनल लग रहा है या ऑर्डिनल लग रहा है? Nominal. नॉमिनल ऑर्डिनल लेस देन 1. हाँ, Nominal. ऑर्डिनल है ना ऑर्डिनल है. ऑर्डर है ना बेटा? Ordinal. लेस देन 1 mm, 1 to 5 mm and greater than 5 mm. सही. You can see your order over there, right? Good. So those who are not responding, I'm sure वो इसलिए respond नहीं करे, वो गौर से सुन रहे हैं. So as far as you guys are listening and then recording is already done, so I'm fine with it. You guys can go back to the recording to be able to understand. ठीक है जी. चले जनाब, अब next पे चलते हैं. अब now you have presentations of data. This is very important. You have to put it in your thesis, right? Tables, you can put tables. Frequency tables बहुत आसानी से बन जाती हैं if you are using EpiInfo, if you are using SPSS. There are different ways you can develop your frequency tables, right? Cross tabulations are also made. और ये chi-square आपको देता है, तो cross tabulations can be made.
ग्राफ्स में यू कैन मेक क्वालिटेटिव डेटा के डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के ग्राफ्स डिफरेंट होते हैं. ओके, ये क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे बाज दफा, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग योर वाइवा. सो क्वाली एंड क्वांटी के ग्राफ्स कैसे बनाते हो, यू नो. तो ये important है, you need to understand when you collect the data. For example, suppose we need to construct a similar frequency table, right, for diabetic patients coming to CHC of Aachen University, CHC clinics. The following data has been collected based on random sample of 30. अब देखें ये 30 हमने random sample data ले लिया, ये हमने इन सारे diabetic patients हमारे पास आए हैं, right, और उनका हमने age ले लिया diabetic patients के. The best thing is that whenever you have a data, always arrange. अब सबसे छोटी एज आ गई 32, सबसे बड़ी आ गई 71, राइट. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 71 में से 32 निकाल दें 39. सो इसका मतलब क्या हुआ कि 39 इज द एज रेंज यू आर हैविंग. यानी जो लोग सबसे यंग थे, सबसे ओल्ड थे, 39 इयर्स का डिफरेंस है उनमें, राइट. सो डाइवर्सिटी इज वेरी हाई. So 39 years mean कि बहुत different किस्म के लोग diabetes आ रहे हैं. So then you really, and especially 32 is a big concern क्योंकि इतने छोटे-छोटे लोग आजकल, and you know that diabetes mellitus का burden इतना high हो रहा है and all. So this is your data. इस पे आप अपना analyze, या आपने analyze किया, you can write down your discussion very easily on this one. So you need to look at the data, put them in, arrange it, and then try to see what is the range, the minimum and the maximum. You could also do cross tabulations. This is very, very simple. If you go to SPSS or PSS भी आप use कर सकते हैं, और you can just take the cross tabulations. और बहुत सारे YouTube में you just put how to do cross tabulations using EpiInfo, SPSS, PSS, वो आपको easily calculate करना सिखा देंगे. बहुत 1 सेकंड का काम है. तो cross tabulation is basically showing you, for example, different assignments we are looking at, that supracoastal axis and subcoastal axis, right? And then we just would like to see among male and female. So you could see that सबसे ज़्यादा males हैं जिनमें supracoastal axis है, right? और females बहुत कम है, जबकि females में ज़्यादा subcoastal axis है. But overall males are the ones who are having both assignments, supracoastal and subcoastal. So this is giving you a lot of information, and you can easily write down your discussion based on that. और इसी का p value भी हम ले सकते हैं, जिसको हम chi-square करते हैं, but I'm going to cover after some time, not now, right? So this is your cross tabulation. So with your qualitative data, I will tell you what you need to do, but you need to understand with quantitative data आप क्या कर सकते हो. क्या था quantitative data? Ratio scale and interval scale. ऐसे ही था ना, discrete and continuous, right? So you could calculate the histogram, you could calculate relative histogram, frequency polygon, cumulative frequency polygon, dot plots, scatter plots and all. और ये सारे के सारे बहुत आसानी से हो जाते हैं, एक ही क्लिक करना होता है. PSS में, SPSS में, EpiInfo में, and you have it in your hand, लेकिन क्लिक करना होता है आपको, right? It's important. So histogram is basically most common graph, and you can develop it with the continuous variable. अब मैंने तुम्हें बताया था ना, डिस्क्रीट भी है बेटा, उसको छोड़ना है. यहाँ कंटिन्यूस होना जरूरी है, डेसिमल पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है. ये देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने, कंटिन्यूस नेचर ऑफ quantitative data. It's important you have to do that. So that will give you histogram like this. तो ये कितना खूबसूरत सा histogram नजर आ रहा है. It's important that histogram में these points are always connected. See, ये जो आप देख रहे हो ना, ये these points are always connected with each other. Right? It need to be connected. अगर ये connected नहीं होंगे तो ये histogram नहीं है. बार के अंदर जो है वो थोड़ा दूर दूर बने होते हैं, बार कभी भी connected नहीं होता. Okay? लेकिन हिस्टोग्राम आर कनेक्टेड. ये तो लाइन तो थोड़ी सी दिखाने के लिए आपको डाली, वरना एक्चुअल में तो आपको ये लाइन नजर भी नहीं आती है, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी वेरी मच कनेक्टेड, राइट? Okay, so this is your histogram, and then you have frequency polygon. What you will have to do, make your histogram और उसके middle points को connect कर दो, and this becomes your frequency polygon. बस इतनी सी बात है, और ये इस तरह से नजर आने लगता है, right? So it's very simple. You can easily do it, और वो भी one click away है. So you just have to remove the grid at the back. ये जो grids है ना, उसको double click करोगे और वो आपको grid कहेगा remove करने, तो उनको कहेंगे grid remove कर देंगे, and then you can easily make your frequency polygon for your thesis, right? You can also have scattered plot. Scattered plot is just telling us that what is happening in this world, right? अब देखो age है यहाँ पर, ये सारी age लिखी है 30 to 80 years. सबके weight लिखे हैं 40 से 90, right? So we are having age here, and
weight here. So what you could see that there is one person, right, जो बहुत young है लेकिन उसका वजन मेरे जितना है. See, it's a really high weight. खैर मुझसे थोड़ा ज़्यादा है, but there is a weight. So this person is an outlier, right? And but there are some people as they are around their weight is 60. And और वो लग रहा है कि बिल्कुल एक, can you all see that? देखिए ये बिल्कुल straight line जा रही है. देखें कितने सारे लोग हैं. It seems that a lot of people are around the around 60 years of age, and they are having different kind, they are older and younger and all. Somehow लगता है कि 60 पाकिस्तान का buzzword बन गया. I'm just kidding. So it seems like that a weight 60 है हर age के लोगों का और around है. But you could also notice that youngsters are also somewhere here. So these must be men, because there are boys की age weight हमेशा ज़्यादा होता है. So we need to check कि अब इसमें male कौन है और female कौन है. तो male and female का भी scattered plot बन जाता है, and you can easily look at the different colors of dots. अभी तो this is all red color of dots, so you can easily see them, and then it's much easier for you if you just look at it that way, right? So age and weight can be seen, and you can easily write down your discussion. Then you have a graphical presentation of qualitative data. It's simple bar chart जो मैंने अभी बनाया भी था. Multiple bar charts, component bar chart, sliding bar chart, and pie chart, right? So let us look at bar chart. See, male and female combination. You can see, make a bar chart like this. You can have multiple bar charts. अब male में ascites कितनों को है, कितनों को नहीं है. Females में ascites कितनों को है, कितनों को नहीं है. You can also make a component bar chart. Medium, good, excellent, and bad, right? This is basically ordinal. Right? This is the ordinal data, medium, good, excellent, and bad, right? So something like that. You can just say bad, good, medium, and excellent. You can just flip it and then make it an order. But this is an ordinal bar chart. We call it component bar chart. Then this is your sliding bar chart. जो हम अपना pyramid नहीं बनाते, ये वही है, right? ये वही है. We always make our pyramid. Try to see what is the distribution of the population, right? तो ये काफी पुराना मैंने उठा लिया, लेकिन अभी latest वाला is little different, right? Latest वाले में जो यंग्स, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये दिस इज लाइक दिस, जो हमारा यंग वाला जो एडोलेसेंस है ना, वो सबसे ज्यादा है, और अभी एज भी थोड़ी लंबी जा रही है. अभी आपको ऐसा नजर आने लगेगा इस टाइप का, जबकि यहाँ थोड़ा सा ये देख ली, दिस इज डिफरेंट हियर. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू लुक. दिस वाज वेरी मच स्लाइडिंग के आराम से हम जा सकते हैं ऊपर, बट दिस वन इज बिकमिंग फैट ओवर हियर, क्योंकि हमारे जो एडोलेसेंस हैं वो ज्यादा है, तो दिस वन इज बिकमिंग फैट हियर. Right? So this is another way of showing the graph, which you need to understand, and especially if you are making your this thing, you're writing down your thesis, right? So it's important. So this was your sliding bar chart, and then pie. You know pie, हम रोटी बनाते हैं, we try to see. जी बिल्कुल, pie भी बन सकता है, right? So this is so this is all about the. This is all about the introduction of the biostats and organizing and displaying data. Before moving to another class, two things we need to do: 2 minutes of stretch break, and 2 minutes of any question if you are having. बहुत ज़्यादा कोई major question है तो वो पूछे मुझसे. ठीक है, तो जल्दी से आप stretch break ले ले. तो it is exactly 34. And I will start my next session at 35. Okay? So जल्दी से जगह से खड़े हो जाए, भाग के वॉशरूम से आ जाए, बस 2 मिनट में मैं स्टार्ट करती हूँ. ठीक है?
Okay. So are we back now? I think they're all back. 53, 54. Ma'am. Gee. Ma'am. Okay, so I'm starting the session now. The next important thing, which I have started covering already, this is my style. I try to cover in the first hour maximum things so that बाद में clarities हो जाएं चीजों की. So now I will talk about the measures of central tendency and its variability. That measure of central tendency का मैंने नाम पहले लिया था mean, mode, median, and then I said that variability is the range, standard deviation, and variance, right? So I'll be focusing mainly on these things now for you to understand. Measures of central tendency, as I said, is basically mean, mode, median. तो ये तो आप चलते फिरते भी याद करते रहे. Measure of central tendency is mean, mode, median. So you can calculate mean, mode, and median, right? We all know what is mean, right? We know the central point. Mean is always a central point, right? So अब अपने जहन में ना हमेशा एक पिक्चर बना के रखें, right? So what picture is this? That mean is also a kind of central point. When you are having any kind of circle, it's a central point, right? If you are having this kind of distribution, so this is a central point, right? You always should know central point, right? Now, अब central point का मसला ये हो रहा है कि central point is different, or if you are having that distribution, if you are having that distribution, you need to have some kind of central point. अब central point जो है वो इसका यहाँ है और इस point का यहाँ है. अब आप मुझे कह रही होंगी कि क्यों उन्होंने ऐसा किया? ये तो central point यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ क्यों जा रहा है इनका, right? तो इसका आंसर मैं थोड़ी देर में आपको देती हूँ, right? When you are saying central point, it's important that it should be a central point of overall, right? Okay, so in the past, what you have been doing, add up all the numerators. So your formula is mean bar. Why we are having mean bar? Because आपने और मैंने decide किया हम statistics ही होगा ना, छोटे से नंबर है, population तो नहीं हो सकता ना. अगर ये population होता तो ये सिर्फ x होता, right? लेकिन अब और x bar हमने रखा है इसको because it's a sample data. और कुछ लोग इसके अंदर छोटा सा head भी लगाते हैं. We try to टोपी नहीं हम कहते हैं उसने तुम्हें टोपी पहना दी, तो यहाँ पे हम उसको टोपी पहना देते हैं किसको? स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि हमने जो है सैंपल से चीजें उठा ली और उसको हम पॉपुलेशन में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो आई एम यूजिंग सम ऑफ द वर्ड्स जो लोग यूज करते हैं सो दैट यू गाइस रिमेंबर, राइट? Not to don't think that this is who I am and all, don't judge me, but I'm just using these words क्योंकि आजकल के बच्चे यही तुम लोग इसी तरह words से समझते हो, तो that's why I'm using those words, right? So you can put a hat also if it is a sample data. If it is a population, you might have to remove the hat. This is what I just wanted to tell you, right? So what you need to do, you have a numerator and then you have a denominator, right? So these are all the age of the people. So you have to put all the age of the people over here in the numerator divided by the total people, right? So how many people do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we will put 6 over there. So the mean age of the patients coming to the clinic is 63.167. अब जल्दी से मुझे बता दो कि ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव डेटा है? Quantitative. Quantitative. और उसमें कौन सा है? इंटरवल रेशो है कि ऑर्डिनल नहीं? हाँ, अभी बेटे आपने बोला क्वांटिटेटिव, तो इंटरवल वाला है या रेशो वाला है? रेशो. क्यों? एज अगर 0 है तो एज 0 है ना. 0 अब ये तो मैं नहीं कह सकती ना इस दुनिया में आने से पहले मेरी एज जो थी वो 0 थी, जब मैं इस दुनिया में आई तो मैं 500 साल की हो चुकी थी. ये तो नहीं बोल सकती ना मैं कहूंगी जब मैं इस दुनिया में आई तो मैं 0 एज पर थी. Got it? Always remember that. You need to remember that because age 0 means that there is no age, isn't it? तो age का मतलब absence है, ratio है. Ratio याद रखना. देखो जब भी मैं cross check करती हूँ, so you have to be attentive to apply the same knowledge. Okay. Now let's score of an exam. Right? So all of you have given the exam or सब किसी की score है नहीं 68 किसी का नहीं आएगा इंशाल्लाह, don't worry. So I'm just using this example, right? So then these are the score of the exam. If I have to calculate the mean, what am I going to do? Add all of them. Divide किससे करूंगी? 6.
Shabash, 6 से. And then I will have mean score of the exam as 81 among all the friends, right? And I really pray 68 kisi ka na hai, right? So it's mean the mean score of the particular group is 81, right? Now what is median, right? Median is a middle number, right? अब मैंने for example एक shape बना दी, ये shape बना दी मैंने, और एक shape मैंने ये बना दी, एक शेप मेरी जो है वो यूं है. अब इसमें मिडल होना चाहिए ना. इट्स सो कंफ्यूजिंग. मीन कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं? देन आई हैव टू थिंक अबाउट अ मीडियन नंबर. तो अब मुझे मीडियन देखना होगा. यहाँ से भी कुछ नंबर चल रहे होंगे, यहाँ भी नंबर चल रहे होंगे, तो मेरा मीडियन प्रोबेबली थोड़ा सा यू होगा, कहीं इसके बीच में होगा. अब नाउ दिस वन इज लाइक दिस. तो मीडियन अगर यहाँ इक्वल नहीं है तो देन दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली माय मीडियन वुड बी हियर, एंड फॉर दिस वन प्रोबेबली माय मीडियन इज गोइंग टू बी दिस वन, राइट? सो मीडियन need to be in middle of somewhere. It's important that you need to understand that what is the median, right? It's important. So median can be easily calculated by this, right? What you need to do, just arrange it in a ascending or a descending order. कोई भी ले लो, 3 से 12 कर, 22 कर लो, 22 से 3 कर लो, but you need to make sure it's ascending or descending order, and try to pick up the middle number. Now how will you pick up the middle number? अब ये तो इतने छोटे हैं, ये कितना आसान है ना? बहुत आसानी से हो जाएगा. What I'll do, I'll say कि मैंने ये निकाला, फिर मैंने ये निकाला, फिर मैंने ये निकाला, फिर मैंने ये निकाल, करते करते I will come to the middle number, isn't it? Simply मैं आती चली जाऊंगी, right? अब problem is that अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और मैं ये करके बैठी रहूं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी देर में तो कोई प्रेग्नेंट औरत प्रेग्नेंट होके डिलीवर होके घर चली जाएगी. So I don't want to wait for 9 months. The best thing is that I should come up with some kind of formula. So now look, it is 15 after hardship. It's 15. अब इसका सिंपल सा तरीका है. इसमें क्या है? Position of the median is n plus 1. Put this formula divided by 2, and then what is n plus 1? आपका n टोटल क्या था? 17. ये 17 लोग थे. 17 को आपने प्लस 1 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 9 आ गया. तो वो कह रहा है 9th वाला हिस्सा उठा लो. अब गिनो यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 वाला था. देखो ना, ये 9 है, isn't it? देखो, और ये 15 है, right? And then if 22 is replaced by 100, then the median is 15, right? If 3 is replaced by 103, the median is 15. वो ये कह रहे हैं मिडिल नंबर मिडिल ही रहेगा, चाहे आप जो है ना वो कुछ भी कर लें, चाहे आप जो है यहाँ पर कुछ और लिख दें. You just write on whatever you have to write down. तो but number वही रहेगा. Number would never change. So this is what they are trying to tell us, that median is always a median. So this is your median. So now you know how to calculate, right? Now next one is this is also median. This is just to tell you कि अगर दो नंबर एक जैसे आ गए तो क्या करोगे, right? Now अब यहाँ पर आपके आ रहे 16 plus 1 किया, divided by 2 किया, 8.5 आ गया. अब 8.5 में क्या करोगे कि 8 पकड़ो या 9 लो. So you are very confused what need to be done. So what you will do now, your middle number basically was 8.5, right? तो गिनना शुरू करते हैं. Let's 1. Oh, sorry. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 8.5 कह रहे हैं. अब हम क्या करें? अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या. यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी ये दोनों वैल्यूज पे हम आके we got stuck. So it is 14 and 15. So what are you going to do? You can take the median number as 14.5 क्योंकि it is में in between है. Another way is also 14 लिया आपने, इसको प्लस किया आपने 15. कितने बने? 14 को प्लस किया 15 से 39 डिवाइडेड बाय 2 करो. मैम कितना बड़ा? 29. Sorry. Where is my pen? My pen has run away somewhere. This is it. Okay. So ये तो भाई दोस्त बन गया मेरा. अभी ये तो जान भी नहीं रहा है, इसको जाना नहीं है. Okay, so 29 by divided by 2 करो, कितना बचा? 14.5. Exactly. So what I'm trying to tell you over here, that either you do any method. कुछ ऐसा नंबर है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या करें, तो आप मीन निकाल लो उसका. अदरवाइज you know 14 and 15 है तो 14.5 ही होगा ना.
शॉर्टकट भी तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से एग्जाम देते हैं बायोस्टैट्स और कुछ बैठे रहते हैं, और जो बैठे रहते हैं वो ये पूरा मीन निकालते हैं, जो जल्दी से कर लेते हैं स्मार्टर होते हैं। और आप लोग सब तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, तो 14.5 यहाँ से पिक कर लेना, यू आर डन विद इट। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर मीडियन, राइट? सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मीडियन। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज मोड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मीन मोड मीडियन बोल रही हूँ ना डे 1 से, आई मीन फर्स्ट लेक्चर से। तो मोड इज द टॉप मोस्ट वैल्यू। रिमेंबर आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, और मैंने कहा था इसका मीन जो है वो शायद कहीं पे इधर होगा और इसका मीडियन भी इधर ही होगा, ये तो बीच में आ रहा है। अब मोड का क्या करें? तो मोड इज 2, तो देन वी आर हैविंग टू मोड्स। अक्सर हम ऐसे नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि व्हेन पीपल usually when pregnant women are coming to our clinics, if they are younger, the birth weight is very good, and if they are older, some birth weight is very good, but somehow something happens in the middle. when a woman बहुत जब middle में होती है तो something is wrong, that LBWs बहुत होते हैं उनके। अक्सर ऐसा होता है जब हम अपना प्रेगनेंसी का चार्ट देखते हैं, दैट बर्थ वेट ऑफ अ बेबी, तो जो यंगर होती है उनका बर्थ वेट बहुत अच्छा जाता है और फिर सडनली डिप आता है। प्रॉबेबली ये वो एज ग्रुप है जब ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने 2-3 बच्चों से और लाइफ में और करियर में और सारा कुछ। फिर जब ओल्ड एज में पहुंचती है तो बहुत कम औरतें होती है जो डिलीवर करती है ना, नॉट एवरीवन। तो उधर भी वेट एकदम से बेहतर हो जाए, क्योंकि वो फिर एक समहाउ एक लास्ट बच्चा होता है, पूरा खानदान और उसको फोकस कर रहा होता है। So this is how we usually see it, and then it becomes bimodal. It's a very important information to share in your thesis and discuss it in your discussion, because you need to tell the world that what something is going wrong in the culture of Pakistan with the pregnant woman in terms of birth of the baby. So these kind of things are very helpful when you talk about the mode, right? Or so you need to also look at some of their examples. Another very good example which every statistician or every epidemiologist try to see is the salaries, sample salaries. अब देखें ना, sample salaries 6,000, 10,000, 14,000, 50,000 and 10,000 है. But first of all, always put it in a ascending order. This is what I tell all my students. Please put it in ascending order. If you are not going to put it in ascending order, you yourself would be very confused with it. Always put it in ascending order. Mean, mode, median तीनों निकालना आसान है, right? अब here, what you could see, mode कितनी दफा कितने ऐसे लोग हैं, अगर मैं इसकी सैलरी का बनाना शुरू कर दूं अभी ग्राफ, राइट? ये अगर मैं सैलरी का ग्राफ बना रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, राइट? 50,000 है, राइट? ये $50,000 बोलते हैं ना, अब आप दिल ना छोटा करो, डॉलर्स बोलते हैं। यू ऑल आर हैविंग दिस सैलरी $6,000, $110,000, amin, right? So you are having this salary distribution. So if I have to make, what am I going to do, right? And this is 1, this is 2, right? तो अब देखें कैसे चल रहा है मेरा। यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 8 तो है ही नहीं, तो 8 के लिए बिल्कुल नीचे आ गया, राइट? एंड 10 आते ही ऊपर चला गया, देखा आपने? और फिर उसके बाद 50 आते ही फिर नीचे आ गया, राइट? दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग। सो वी आर हैविंग मोड, दिस इज द मोड, यानी 10,000 mode hai. And then if you have more numbers, so then we can really say that it's the mode, right? So this is what mode is. So this is how you see the mode, right? Okay, so let me show you the picture of it. अब perfect जो होता है ना, standard normal distribution when symmetrical शक्ल नजर आ रही हो, बिल्कुल exactly shape जो है वो right side and left side का exactly same है। देखें ये भी बिल्कुल same shape है और ये भी बिल्कुल सेम शेप है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको करने भी जाएं तो एग्जैक्टली सेम शेप आएगा। इस सूरत में आपका मीन, मोड, मीडियन तीनों सेंटर में आ जाएगा। आपकी जिंदगी बड़ी आसान है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मोड, मीडियन इज एग्जैक्टली सेम। Okay, so put a line in between and this is your mean, mode, median, and it is exactly same. So this is what students often get confused, I notice, when any similar kind of question comes over there. कभी कभी डिफेंस में सवाल कर देता है कोई, मुझ जैसे कुछ लोग बैठे होते हैं तो वो अजीब से सवाल करने के शौकीन होते हैं, तो सडनली दे आस्क दिस क्वेश्चन कि अच्छा ये बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन, मोड, मीडियन क्या होगा? तो यू हैव टू से जस्ट रिस्पॉन्ड सेम, right? So this is what you need to do. Now this is bimodal, which I was trying to explain you a little bit earlier. देखो अब 2 modes नजर आ रहे हैं, they are equal, and but mean and median are in between. मैंने इसी तरह बनाया था ना पहले, right? So because they both are equal, right and left, तो mean and median exactly same हो जाते हैं। अब can you see any mode over here? No, you can't see any mode. Mean and median है, mode नहीं है, so you would say there is no mode, right? Now look at this one, which I was trying to draw for you earlier. Right skewed है, देख रहे हैं आप, skewed towards right. अब जैसे ही skewed towards right होता है तो उसका मतलब ये है सारे लोगों की तनख्वाह तो जो है वो 1-1 लाख है और यहाँ पे बीच में आगे 2.5 से 3 लाख है।
लेकिन एक ना एक ऐसा बंदा है जिसकी तनख्वाह जो है वो 10 लाख है. So this is going really towards right. अब जहां पे भी बिगर नंबर जाएगा ना, मीन बहुत बेवफा है, मीन बढ़ जाएगा. तो जिसकी भी बड़ी तनख्वाह होगी, मीन उसके साथ साथ मूव करेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट. आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स जो तुम लोग जिंदगी भर याद रखो. ओके, सो वेयरएवर द बिगर नंबर इज गोइंग, मीन बेवफा उसके साथ जाएगा. तो मीन वुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स दैट. सो सी, इफ दिस इज द बिगर नंबर, मीन इज टुवर्ड्स यार. सो मीन इज टुवर्ड्स द राइट. नाउ लुक एट द मीडियन. मीडियन बहुत वफादार है. मीडियन विल स्टे. डजंट मैटर, तुम इस नंबर को छोटा करके नीचे ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, यूं बना दो इसको, या इस नंबर को और आगे ले जाओ, whatever, median will always be in between. This will always stay, right? So always remember that median will stay. And then your mode will be the topmost. Topmost mean कि जितनी maximum लोगों को salary मिल रही है. So मैंने जैसे कहा 2.5 से 3 लाख maximum लोगों को मिल रही है, तो that's your mode. So mode is also very वफादार. It just tells you ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है, right? So rule 1, median always in between mode and mean. Rule 2, the mode is the peak. And rule 3, मैं बनाती हूँ rule. I will write a book on it. Rule 3, mean always move with the highest number, right? So you need to remember that. Now, if it is negative side, ऐसे भी तो होता है ना. Some of the people are having very low salary. हमारे cleaners की बेचारों की बड़ी कम तनख्वाह होती है. So if we just place cleaners over here and rest of us over here, तो उनकी वजह से भी फिर mean जो है वो फिर चला बेवफा है, वो ज्यादा चला गया. अब यहाँ पे चूंकि ये कम था, तो फिर उसके साथ मूव कर दिया, राइट? तो वो अपना चेंज कर लेता है. जो भी ज्यादा है या कम है, जो पीक पे है ना, बस वो पीक की तरफ चला जाता है, राइट? तो ये फेमिनिस्ट वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा पीक पे चले जाते हैं, राइट? सो कीप दैट इन वे. तो मीन टुवर्ड्स हियर, मीडियन ऑलवेज इन बिटवीन, एंड मोड ऑलवेज द टॉप मोस्ट, राइट? सो इट्स द सेम रूल, राइट? सो नाउ पोर्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ मैम, यस. हाँ बेटा, बोलो मेरा बच्चा. क्यों में मोड जो है वो ज्यादा होगा दोनों में, किस में? पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन. मोड विल बी ऑन द टॉप मोस्ट वैल्यू. ज्यादातर की सैलरी क्या है? देखो, अगर उसको कंपेयर करते हैं, क्लीनर को हम अपने लोगों में शामिल कर ले, तो क्लीनर्स की तनख्वाह तो बहुत कम है ना. तो मोड विल डेफिनेटली भी 2.5 से 3 लाख, राइट? लेकिन अगर मैं क्लीनर्स के साथ में उनको भी ऐड कर देती हूँ जिनकी तनख्वाह जो है बहुत हाई है, 10 lakhs है, तो ये फिर यू जाने वाला है. फिर दिस विल बिकम लाइक दिस. इन दिस सिचुएशन मैंने कोशिश की है कि इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल बना दूं. पता नहीं बनी है कि नहीं, मैंने ट्राई तो किया. ओके, इफ आई एम सेइंग दिस, सो देन मीन, मोड, मीडियन विल ऑल बी इन सेंटर. रिमेंबर आई टोल्ड यू, रिमेंबर कि मीन भी यहाँ पर है, मोड भी यहाँ पर है, और मीडियन भी यहाँ पर है, ठीक? लेकिन इफ आई एम जस्ट टेकिंग वन पीक, तो फिर डेफिनेटली मीन विल मूव टुवर्ड्स द लार्जेस्ट सैलरी, राइट? और सबसे ज्यादा लोग जो इफेक्टेड होंगे, दैट इज ऑलवेज अबाउट, राइट? अभी और बता रही हूँ ना, डोंट वरी. अभी आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जांपल, सो यू विल बी रियली फाइन, डोंट वरी, ठीक है? सो नाउ आई एम टेकिंग यू फर्दर. Okay, now position of the mean and median. When a distribution has a few extremely high scores, as I told you, then mean we have a greater value than the median. ठीक है? Positively skewed जो मैंने कहा right पे जाएगा. If it is a negatively skewed, so then definitely mean will move towards the negative. तो जितना भी जो peak पे चीजें होती है ना, mean वहां चला जाता है, right? And then median will always be in between, and mode will be the highest peak, जो not peak, the highest height. तो वो आपका मोड उधर ही रह जाएगा, right? So position of the mean and median also is having two important points. If the mean and median are approximately equal, then the distribution is almost always symmetrical. So no skewed. यही मैंने कहा ना, mean, mode, median अगर बेटा एक जगह आ जाएगा, so what are you going to do? Mean, mode, median is same here. तो आपके तीनों इसमें आ जाएंगे. कोई skewed symmetry वो है, asymmetrical नहीं है, symmetrical है. इसकी शक्ल और इसकी शक्ल exactly same है, right? When the distribution is skewed, जो कि ये भी हो सकता है, जो कि दोनों हो सकते हैं ना, या तो ये भी हो सकता है, और या तो आ गया मेरा पेन, ड्रॉ किया, और या फिर के, एक मिनट, इनको जरा नाराजगी हो रही है, मुझसे नाराज हो रहा है. चलो कोई बात नहीं, ये रेजर जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहता. ओके, इफ वी आर हैविंग अ सिचुएशन लाइक दिस, यहाँ से और फिर यू, राइट? सो दीज आर स्क्यूड. दिस इज स्क्यूड टुवर्ड्स राइट, and this is skewed towards left,
right? In that situation, your mean will move with it, median will stay, and then definitely mode iska ye hai, iska mode ye hai. So this mode will stay as it is. Okay, so you just have to remember that. This is what important concept is, right? अभी थोड़ी देर में और समझ में आएगा, don't worry. Now, अब आ गया हमारे पास measures of variance, right? Variability की now we are talking about variability. Variability का मतलब होता है कि range कहाँ पे spread है. It could be variance and it could be standard deviation. Very common word. Statisticians standard deviation को ऐसे बातें करते हैं जैसे बहुत ही आम सी बात है, right? And it is आम सी बात. So अभी now I will teach you how I am making it आम सी बात, right? When we are saying measure of variability, so look, we are having a data over here. So we know, we just would like to see the data, right? Now 5, 6, 8, 10, 12, 14 and 15 and 1, 4, 8, 10, 12, 16 and 19. लेकिन जब हम इसका mean calculate कर रहे हैं तो दोनों 10 आ रहे, right? The mean is just 10. But if we have to calculate the median, तो median भी 10 आएगा. Remember? तीन चीजें यहाँ से काटी 10 बचा, यहाँ से काटी 10 बचा. लेकिन जैसे ही हम इनका mode देखते हैं तो mode, no mode. Is there any mode? Is there any mode in this data? No mode, No, ma'am. right? अब we are stuck now. So mean और median same है, data बहुत different look दे रहा है, mode भी नहीं है. So what to do? We have to talk about variability now. So let us look at the variability. So we will move into the spread, the variability. So range, variance, standard deviation. So now how to calculate the range? I have already taught you. Biggest number लो, smallest number लो, 30 निकालो, बोलो कि हमारे data के अंदर जो है वो range ये आ रही है. It's 13. 13 difference है लोगों की values में, whatever values we have picked up. Okay. Now sample variance. You don't have to calculate. Okay. Don't worry. You don't have to calculate. Usually you don't have to calculate variance within your exam, but you sometime you have a question, you just have to interpret it, right? So what is variance? Variance is the dispersion. ठीक है, फैलाव. Very simple way of calculating it. जो तुम्हारे x values हैं वो लिखते हैं, उसको add करते हैं, mean में से उसको subtract करते हैं, आपकी x values को, इसको आपने अपने mean से subtract किया, put it over there, and then उसको square करते हैं. As soon as you do the square, this is your x minus ये वाले वैल्यू को आप स्क्वायर कर दे बस. अब देखो ना, 625 को स्क्वायर किया मैंने, 71 को स्क्वायर किया, -234 को स्क्वायर किया. As soon as you square, you have a number over there in your hand. This is a summation of the x minus x bar, which is square, right? So put this value over there, divided by n minus 1. अब मेरी वैल्यूज कितनी थी? 1, 2, 3, 4. 4 थी. 4 minus 1 is 3. और ये जो मेरे हाथ में आया है, this is my variance. 288.67. It's basically 221,000.67, which is making no sense. So we need to think about how to make a sense. So we will take the under root of it to take the standard deviation. So variance is, you could denote variance for the population parameter. Remember I taught you parameter? इसको आप हमेशा sigma बोलते हैं, sigma square. That's your population parameter. When you talk about your sample parameter, sample variance निकाल रहे हो तो S square. Always remember that. Okay. So this is your variance. So what we calculated at the back, basically, what we did calculated at the back is basically, ये पीछे मुझे जाने नहीं दे रहा. Okay, doesn't matter. Sometime ये वर्क इतना अच्छा करने नहीं देता. Doesn't matter. So what we calculated at the back was the variance, and this is how you put the population variance and sample variance, right? Now, this is not making any sense to all of us. So we have to go for standard deviation. So standard deviation, look, पहले हमने square डाला था ना, उसको under root लिया है मैंने बस मैंने किया क्या है, मैंने इसको square था ना ये, इसका मैंने उठा के अंडर रूट ले लिया, कुछ भी नहीं किया. As soon as I've taken the under root, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बन गया. और as soon as जो s square था मैंने उसका मैंने अंडर रूट लिया है तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ s बन गया. Got it? So this is what you need to do to be able to calculate the standard deviation, right? अब I will tell you a little bit more about standard deviation, ताकि कोई पढ़ाता नहीं है usually, कोई epidemiologist नहीं पढ़ाता, but I think I should tell you a little bit of it, not much. That what is that? So standard deviation is denoted like this. ये population का है और ये sample का है, right? ठीक है. अब चलते हैं आगे. अब now look at this one, the variance and standard deviation, right? Now, when the data are clusters about the mean
the variance and standard deviation will be somewhat small. अब ये देखो, अगर आपका डेटा सेंट्रल टेंडेंसी में मीन बहुत करीब करीब है, right? So करीब करीब है, तो your data is divided in between 3 to 5 values, right? So your mean is here, right? Now your mean is 5.2. This means that you are having a widespread data, 0 to this, right? अब you must be confused कि यहाँ क्या था जहाँ पे सब values कम थी and then data distribution was this, and usually I show my students data distribution like this. ये हो गया आपका normal distribution. देखा आपने? और जैसे ही मैंने आपके लिए दूसरे में बात की तो उसके अंदर आपका distribution different हो गया, right? So यहाँ पर आपका distribution बहुत फैला हुआ आ गया. If I just take it this one, right? So if I take this, तो देखिए आपका distribution कितना फैला हुआ आ गया. लेकिन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फैला हुआ है. दोनों का मीन सेंटर में ही है, बट योर डिस्ट्रीब्यूशन, योर डिस्पर्शन इज रियली वाइड, राइट? सो अब इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल डू, यू विल डेफिनेटली बी गोइंग फॉर द लुकिंग एट द डिस्पर्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे मीन मोड मीडियन सेम आ रहा है, लेकिन मसला डिफरेंस आ रहा सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्शन में. सो यू विल बी टॉकिंग लुकिंग एट द डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन में काफी डिफरेंस आ रहा है, राइट? सो दिस इज जस्ट टू शो यू that this is just to show you that when you are talking about variance, you will calculate the variance, and this is how you will take the under root of it, which is your S square, right? Now, I wasn't planning to teach you the chi-square, the distribution, but I think it's important I should tell you a bit of it, right? Otherwise, you will be confused later on that what she was trying to say. So let me just pick up a board over here and whiteboard leti hu, और whiteboard leke let me try to help you. I don't see the whiteboard in this one. I don't know why. Probably I can just stop sharing and let me try to pick up the whiteboard for you somewhere. This is it. Okay, now I'm sharing my whiteboard. Now this is my whiteboard, right? Now pay attention, especially for 2 minutes. बहुत focus attention रखना. You have to keep it in your mind. Now, what is when we are saying standard deviation, right? So हम क्या कहते हैं, हम इसको बनाते हैं एक लाइन ऐसे. I'm sorry मेरी लाइन इतनी अच्छी नहीं बनी, और हम इसको normal distribution curve बनाते हैं, which is called normal distribution curve. ठीक है? और इसके अंदर हम कह रहे हैं, हमने आपको भी क्या कहा, मीन मोड मीडियन सारे बीच में होते हैं, यही कहा ना हमने आपको, राइट? इसको जरा सा अटेंशन से देखो. मीन मोड एंड मीडियन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट? जिसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं लोग. ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, राइट? अब इसमें when we are saying that square कर दो और adjust करते हैं, basically what we are adjusting for, हम कह रहे हैं मीन जनाब ये 0, हम इसको z स्कोर पे ले जाते हैं, right? हम कहते हैं मीन 0 है. let me change the color of my pen now. ठीक, 0 है. फिर हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे +1 वैल्यू है, right? फिर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे +2 वैल्यू है. फिर हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास +3 वैल्यू है. सिमिलरली हम कहते हैं हमारे पास यहाँ -1 है, हमारे पास -2 है, और हमारे पास -3 है, राइट? अब एनी एरिया ग्रेटर देन -3 वुड बी द टेल्स. इसको हम टेल कहते हैं, टेल. ठीक है, ये हमारा टेल बन गया यहाँ पे. अब नाउ लेट मी पिक अप माय डिफरेंट ब्लू पेन नाउ, राइट? तो दिस इज कॉल्ड Z score. Z score means that mean mode median in a normal distribution becomes 0, and then you have a dispersion of +1, +2, +3, -1, -2, -3, or exactly symmetrical hota hai, right? Now, when we are saying that we are having the mean age of 15 years, when we are saying the mean age is of 15 years with the standard deviation, which is plus minus, we often call it plus minus S2, right? हम इससे अब हम ये कह रही है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मीन अगर मेरा 15 है, तो लेट मी पिक अप माय डिफरेंट पेन नाउ. अगर मेरा मीन 15 है, तो इट्स मीन कि मेरा मीन 15 आ गया. अब वो ये कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन को एक दफा प्लस कर दो, राइट? विच इज योर 2, इट विल बिकम 17. कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 दफा प्लस कर लो, इट विल बिकम 19. नाउ यू हैव टू
plus standard deviation one more time, 21, right? Now minus में अगर हम जाते हैं तो it will become 13, it will become 11, it will become 9. So now look at the range of the age we are having, 9 to 21. तो मेरी range क्या है अगर maximum to minimum, 9 to 21, so, right? So 21 minus 9 would be my range. You can easily calculate your range, right? And this is what people try to tell you, mean age is 15 with the plus minus distribution, because you would like to show the distribution of it. And as soon as you talk about standard deviation, it is a standard distribution. So standard deviation is plus minus 2, means ये तुम्हारा क्या था, अगर ये उसका है तो S है सैंपल का, और अगर ये पॉपुलेशन का तो है तो ये सिग्मा है, right? And your mean is mean. That's it, mean of the sample. और sample mean के लिए मैंने x bar लगा दिया, बाद में मैं टोपी भी लगा देती हूँ, so then it is your sample. So this is the concept which comes out as the standard deviation, and this is how you can easily calculate. Now one of a statistician tells you that in this class 50% of the students are failing, Allah na kare, but 50% students are not up to the mark, right? अब फेलिंग मैं देखूंगी कि फेलिंग किस पे बोलते हैं, हम फेलिंग 60 पे बोलते हैं, 60% पे बोलते हैं, राइट? अब चूंकि ये इक्वल है तो इक्वल का मतलब है ये भी 50% है यहाँ और ये भी 50% है, इसका जो अंदर एरिया है ना दैट्स 50-50, राइट? इसका मतलब ये 50 है। अब हम ये कह रहे हैं कि 60 पर स्टूडेंट्स फेल होते हैं, राइट? अब अगर ये 50 पॉइंट ये 0 है तो +1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो वैल्यूज है यही 100, यही हमारी 50 पे डिवाइडेड है, राइट? सो दिस कुड बी, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट यूजिंग ब्लैंकेट एग्जांपल, ओके? तो हो सकता है कि हमें 50, तो ये हो सकता है कि ये हो गया 65 वैल्यू हो गई इसकी हो गई 75 और इसकी हो गई 85, और हम कह रहे हैं कि जितने ये अबव द है वो सारे 15 है, हम इसको वैल्यू दे रहे हैं इस तरह, राइट? सो वी हैव गिवन द वैल्यू, और वैसे हम इसको 68 बोलते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज आप देखते हैं ना उसमें, तो basically you come to know it is 68, 34, 68, and then it becomes at least 90. इसको हम 90 बोलते हैं, वैसे चलो मैं ओरिजिनल वैल्यूज ही ले लेती हूँ for your ease, and this is basically 99. Sorry, इतना गंदा बना दिया मैंने, I'm so sorry. So this is basically the, I have to pick my pen again. Pen, my spotlight. Oh, where is my pen? I don't know, I've select, okay, so now deselect किया मैंने उसको, I don't know, my pen is lost, यही होगा शायद, okay, so I don't know ये pen मैंने कौन सा लिया, but this is then 90, right? So now your statistician is saying that 60% of the class, I don't know what is this, okay, 60% of the class is having the let me just deselect, I think something is wrong, now I have the pen, okay, so 60% of the class is basically 60% is the score and 50% of the class is failing, right? So now if 60% is the score, it means ये तो 68 है points यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे होंगे बच्चे, right? कुछ जो बच्चे इधर से नीचे होंगे ना वो सारे फेल कर रहे हैं, ये सारे बच्चे फेल कर रहे हैं, तो यानी इनकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो दिस इज हाउ, वो जब कहते हैं ना कि जी लुक एट द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन दैट +1 लेस देन +1 आर ऑल फेलिंग एंड ग्रेटर देन +1 और पासिंग, तो इसका मतलब है वो +1 से यहाँ क्या है। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि दिस इज हाउ दे ट्राई टू impress you, जब वो इतने बड़े बड़े jargon words यूज करते हैं, वो बेसिकली बस इस पे चल रहे होते हैं। You don't have to learn this right now, but in your future it is going to be benefit for you. That's why I have showed it to you. Okay, that was the purpose only, just to tell you कि जब वो इस तरह कहते हैं ना कि जी मीन 15 है with the standard deviation +2 है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि रेंज भी आराम से निकल सकती है। और जब वो कह देते हैं कि भाई 50% ऑफ द क्लास इज फेलिंग, तो फिर द फेलिंग 60% वैल्यू है, तो ये 50 वैल्यू है, तो देन rest of the values, so then you can say that major students are actually failing and very few are passing. So this is just to tell you कि this is how वो आपको impress करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? Now I will come back to my lecture again, and it's just a last part of the lecture. मैंने बहुत कोशिश की है टाइम मैनेज करने की, so that people could easily go for namaz, और मुझे भी ज़ाहिर है नमाज पढ़नी है, तो then I have tried my best to tell you how standard deviation basically act on, right? Okay, so
Okay, now I will talk about chi-square. Very, very important, right? तो chi-square बहुत easy होगी सीखो. It's not tough concept. It's a very simple concept. जो पिछला concept था tough था, मैंने इसलिए कहा 2 मिनट पूरा focus करो. Now be relaxed, take a deep breath and just listen. Okay. Now chi-square means that when you take a 2 by 2 table, right? 2 by 2 table, you take a p-value, significance level of a p-value, right? And chi-square can easily be used when you are having an ordinal or nominal data, right? Where you try to look at the relationship between the qualitative variables. Remember, qualitative में आता है ये, ठीक है? Male and female और smoker yes and no देखना चाह रहे हो, right? Or for example, male and female है, smoker yes and no है, you can easily do it, right? So this is your chi-square. मेरी स्लाइड्स इतनी जल्दी से नीचे आ गई कि बस उन्होंने कहा बच्चों को जाने दो, लेकिन मैं जाने नहीं दे रही, थोड़ी देर और लगाऊंगी, right? Okay, so the second example is that you want to look at the relationship of cancer and lung cancer. और ये बहुत smoking के साथ. It's a very common example actually, right? So you want to see the relationship. So then smoking yes or no है, lung cancer yes or no है. तो it's a qualitative, nominal, आराम से compare कर लो. Even ordinal है, आराम से compare कर लो. Relationship of parents and their children education देख लो. Parents education देखो. It's a ordinal, illiterate up to intermediate, graduate. Children education देख लो, illiterate up to intermediate, graduate, and just calculate the chi-square for them easily, no issues. Relationship देख लो, cholesterol level high, low, and middle, or triglycerides लिख लो high, low, and middle, whatever. और अगर सिर्फ nominal रखना है, nominal रख लो and calculate the chi-square very easily. It's not at all a difficult thing. Contingency table, you can just develop by yourself, or you can just ask your computer to do it for you. Honestly speaking, जब मैं चित्राल, गिलगित, and when I'm traveling here and there, जहाँ पे मुझे SPSS और इन चीजों का मेरे ऑफिस की कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता, तो मैं सिंपल ऑनलाइन कर लेती हूँ. ऑनलाइन में मैं कहती हूँ कि कंटिजेंसी टू डेवलप अ कंटिजेंसी टेबल फॉर chi-square ऑनलाइन, और वो मुझे सडनली सामने दे देता है. एंड आई जस्ट डू जस्ट प्लग इन द नंबर्स एंड आई गेट द वैल्यू. ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को एक दिखाती भी हूँ, बहुत जल्दी से दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मेरा गूगल क्रोम उठाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है. नाउ look at this one. So what I'm doing, I'm just saying chi-square online calculation, ठीक है. Right now this one is giving me some kind of steps, you know, different steps. 2 by 2 भी है, up to 5 भी है and all. अब now look at this one. भी मैंने थोड़ी देर पहले I showed you some. So what I will do, try to put some values here. For example, 200. This is 200. I don't know, ये क्यों मुझे तंग कर रहा है. ये पूछ रहा है कि क्या इसी तरह रखना है. हाँ जी, इसी तरह रखना. थोड़ी उनकी सुननी भी पड़ती ना, मैं तो चला रही थी. फॉर एक जगह मैंने दिखाया था ना कि 100 है, पीछे जगह मैंने 2 by 2 टेबल कहीं पे दिखाया था, और मैंने कहा था वुमेन आर रियली लेस, और ये कुछ 89 थी फॉर एग्जांपल, और दिस इज 90. So you can just plug in the number, and as soon as you plug in the number and then say next, as soon as you go over there, भाई कितने सिग्निफिकेंस लेवल लेना है, 0.01 लेना है, 0.05, 1. So 0.05 हमारा जो है वो रिलीजियस नंबर है. I'm so sorry I'm using that word, but याद रखना. लोग मुझे कहते हैं ना कि मैम 0.01 क्यों नहीं है, 0.1 क्यों नहीं, तो मैं कहती हूँ भाई ये रिलीजियस नंबर है. 5 नमाजें पढ़नी है, अब पढ़नी है तो 5% लेना पड़ेगा. तो हंसते आगे से, but this is what it is. Now this one is saying calculate chi-square. जी बोले हाँ जनाब करते. इसने कर दिया आपको कैलकुलेट. देखें, आपके सारी वैल्यूज निकाल के दे दी, और आखिर में आपको ग्रैंड टोटल भी दे दिया. The entire table is in front of you, and your chi-square statistics is 13.452 with the p value of 0.000245. इसका मतलब वो बिल्कुल टेल पे जा रहा है, लेस देन 0.05 है ना. अभी मैंने 0.05 किया था ना, तो p value of this number, right? p value of this number, कौन सा नंबर है ये जो आपने chi-square कैलकुलेट किया. और chi-square किसका कैलकुलेट होता है, क्वालिटेटिव डेटा का रिलेशनशिप देखने के लिए, isn't it? अब हाउ टू रिपोर्ट द chi-square, अब ये भी जिंदगी आपकी आसान करते हैं जनाब. ये देखो जी, नाउ यू कैन जस्ट लुक दिस वन, उठा के यहीं से रीराइट कर लो. रीराइट करना अच्छा, प्लेजरिज्म में पकड़े जाओगे वरना. फॉर्मूला यहाँ से देख लो, बट देन ट्राई टू पिक द थिंग्स, और फिर इसमें अपने एग्जांपल से इसको एडजस्ट कर लो. दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग इट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट जिंदगी बहुत आसान है, बस करना क्या है, थोड़ा सा बहुत फोकस होना है.
you're fine, no problem. आपको statistician को 40,000 देने की जरूरत नहीं है. You can do it by yourself. That's what I'm trying to tell you, right? So just you have to do this. Okay, so now I'm going back to my picture. Can you all see my picture? या मैं दोबारा share करती हूँ screen. Okay. अब नजर आ रही है? And I'm Yes, ma'am. ending Yes, my ma'am. lecture now. Okay. So I'm ending my lecture in 5 minutes. Okay. तो आपने सब सीख लिया जो मैंने सिखाना है. Okay. So this is just the data to tell you that 5 persons were, you know, they used helmet, but still they got the injury. And 995 used helmet, did not get the injury. And then we have a data of 2 by 2 that 25 were not wearing the helmet, got the injury, and 975 were not wearing the helmet and did not get the injury. So they are the lucky ones, to be very honest. उनके साथ मौजा हुआ है कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, but it's always और ये वाला नंबर भी बहुत थोड़ा सा होता है कि ये उनकी इंजरी शायद बहुत उनका परकशन जो एक्सीडेंट था बहुत स्ट्रॉन्ग था, अदरवाइज यूजुअली होता नहीं ऐसा. बट दिस इज हाउ वी गेट द टेबल एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट. ये वाले वैल्यूज डालो ऑनलाइन में, कैलकुलेट योर chi square and it's very easy. Now how to write down a hypothesis, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँ. These are the assumptions. Read it yourself. Seriously, don't be afraid from statistics. Statistics is just a cup of coffee जो थोड़ी कड़वी होती है, but फिर कॉफी तो कॉफी होती है ना, चाय का मुकाबला नहीं होता. तो वही वाली बात है. तो then it's a just cup of coffee and just enjoy it, right? So these are just some assumptions, and then you just have to write down the hypothesis. The way I just told you, in 2 by 2 table. So there you just have to write down the hypothesis. You need to define what is your proportion. What is your proportion? What are you looking for? हम क्या देख रहे थे? Proportion of people who were wearing helmet and still got the injury. यही देख रहे थे ना? दूसरे proportion हम क्या देख रहे थे? Those people who were not wearing the helmet and still did not get the injury. और एक और important point हो सकता है, those who were not wearing the helmet and still got brain injury. So it's up to you how you want to define. मैंने ऐसे define किया, आप कर सकते हो. और simple है hypothesis लिखना. What you are saying proportion of those who used helmet at the time of accident and got injured, and proportion of those who were not wearing the helmet and still got the injury are same. But always remember, I always tell everybody the law, law concept, because I am a daughter of a lawyer. So law concept zen mein aapne hamesha rakhna hai, right? So what you need to remember ke guilty and not guilty. आप किसी को day one से कहोगे ये तो है ही criminal, ये तो है ही criminal, तो वो criminal ही होगा ना, चाहे वो कितना बेचारा innocent होगा. लेकिन आप day one से कहोगे maybe this person is innocent, maybe this person is innocent, और फिर आप देखते हो कि वो guilty है कि guilty नहीं है. This is how you try to see the stuff. So what we need to do over here, that keep that in your mind कि proportion 1 और 2 same होंगे. यानी उन्होंने helmet पहना या ना पहना, injury same होगी. Innocence से start करें and emulsify it, nullifying it. ये जो word है ना nullifying, ये बहुत important है. Is equal to ये जो जिसको हम कहते हैं null hypothesis. तो x naught is always your null hypothesis. ठीक है? Always remember that is important. And then your alternate hypothesis comes, right? इसमें हम कह रहे हैं they both are different. हम कह रहे हैं इसमें both are different. This is your actual hypothesis. हम इसे actual hypothesis कहते हैं. This is your actually alternate hypothesis. को alternate का नाम देते हैं. ठीक है? और this is your actual research question. जब आप अपना synopsis बनाते हो, जो question डालते हो ना, वो आप question इसके basis पे डालते हो. Right? So this is your alternate hypothesis for your synopsis. And then your null hypothesis is when you have to do investigation, आप उसको innocent लेकर investigate करो. Nullify करके investigate करो. So we always say they are equal, right? So this is how you will write down. You can say there is a difference, there is no difference, there is an association, there is no association. Both are correct. Okay? And you can always go back and check in YouTube how they are writing down. वरना मेरे articles, मेरी चीजें कुछ pick कर लो and somehow I have written hypothesis over there, right? So use of helmet at the time of accident, getting serious brain injury are independent or no association. जो मैंने अभी कहा ना, there is association दोनों, तो ये भी ले सकते हो, right? और ये भी ले सकते हो.
right? So you can use any one of it. You can do that. And this is your hypothesis. And then with that, if you have your hypothesis and you just run your p-value by just doing the online work, as I have said it over here. So these are just some concepts. Forget about it. Don't worry about it. ये तो बस ऐसे ही हम statisticians जो होते हैं ना वो थोड़ा impress करने के लिए ऐसी चीजें डालते हैं so that you guys are very impressed from us. Like I'm not a statistician by profession, but I'm just telling you that this is how they are doing it. So this is just to show you कि chi-square table अगर वो आपको manual कहते हैं तो आप chi-square table भी use कर सकते हो. But to be very honest, you don't have to do that. Do the online one which I told you. And this is just that looking at from the table. But I'm just telling you अगर कुछ भी ना हो manual हो तो मेरी slides आपके पास हो so you can easily do it, right? You can just calculate it by yourself by expected and observed values. ये सिर्फ आपको manual तरीका है. पर मैंने आपको जो है वो ऑनलाइन तरीका बता दिया which is much better. ऑनलाइन में भी आपको इसी तरह दिया उन्होंने देखा आपने you notice उन्होंने इसी तरह की आपको बीच में वैल्यूज बना के दी थी. मैम एग्जाम के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स सिंपल इंटरप्रिटेशंस की आएंगी कि इफ यू हैव टू एग्जाम्स में ज्यादातर बस इंटरप्रिटेशंस ही आती है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू दिस इज योर क्वेश्चन ऑन मेरे पास आजकल बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. किसी से मैंने ही क्वेश्चंस बना के दिए थे. आज से 12 साल 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ. When I was the one who made all questions and submitted. I don't know कि कितने रह गए हैं. But usually chi-square कब use करते हैं? You know, so you just have to remember that if chi-square is given, whether it is significant or not, 2 or 3 questions से ज़्यादा कभी भी नहीं आता. ज़्यादातर questions आपके उसमें आते हैं beginning वाले में type of data, central tendency, mean, mode, median. You always get questions from there. Standard deviation, those kind of stuff. ये जो relationship के questions होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम. Minimum questions होते हैं. एक chi-square का देते हैं और एक t-test का कभी-कभी दे देते हैं. T-test is comparing two means, and chi-square is comparing the proportions or qualitative data. That's it. और t-test के अंदर एक qualitative data होता है, एक quantitative होता है. That's it. This is what. तो ये लोग simple questions करते हैं. Inferential statistics के बहुत questions नहीं आती, right? So this is just to show you the another example कि अगर इसका आप alpha 5% में रखते हो, तो this is what your computer, online computer actually calculated it for you. So this is your 165, and then with that calculation, the expected value, your chi-square is already calculated as 14.59 with the 5% significance level. You just have to check it in the tables, and then देख लें कि वो 14 कहाँ पे fall हो रहा है. 5% देख रही हूँ मैं. ये भी बता देती हूँ एक सेकंड में. अभी एग्जाम के लिए important नहीं है, फ्यूचर में important है, right? अब यहाँ पे ये देखें कि what I'm doing over here, I'm just saying कि आपका chi-square क्या था? 14 था, right? और आपका degree of freedom 4 था, right? So then what are we saying? That 9.49 से value बड़ी होनी चाहिए. अब ना आपका 14 आया था जो कि 9.49 से ऑलरेडी बड़ी है, तो you just reject the null hypothesis. Simple. And you will say कि जो आपका alternate hypothesis है, you will accept that. So you will just say 14.59 is greater than the tabulated value, which is 9.49. So we reject hypothesis and conclude that there is an association between type of therapy and patient condition. That's it. जो alternate hypothesis है ना, वो यहाँ पे लिखना होता है. And that's it. ठीक है? So this ends with my session, and this is the reference I used. But मैं अपना experience बहुत डालती हूँ. I am teaching biostats for the last 30 years. तो 30 सालों का experience तो आता है मेरा, लेकिन ये किताबें ज़्यादातर मैंने use की हैं इसके अंदर, जो कि काफी पुरानी है. Any question? Ma'am, very good, very thought-provoking lecture. बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा समझ आया. चले, शुक्र. I'm so happy. And good luck with your exam. I'll definitely pray for all of you. हम आपके लिए अब दुआ करेंगे. हाँ, आप मेहनत करके बिस्मिल्लाह का एग्जाम दें. Thank you, madam. It's really good. चले, fantastic. I'm happy. Thank you, Dr. Praveen, for your cooperation. Thank you, ma'am. And wonderful lecture. I really enjoyed it. We all enjoyed it. Thank you. So sweet of you. Thank you very much.
Okay, this Oh, today is the last Jazakallah, day Jazakallah. and last hours of the session. We had 7 weeks program. It was Yeah, Thank you, CPSP. very fruitful. I hope thank you. participants will pass in the exams. Inshallah. Will be benefited for this program. Wish you all the best for your future endeavors. Ma'am Ameen. Sadiqa, thank you so much. Thank Thank you, you. madam. Always Thank you, Madam welcome. Siddiqa. Welcome. Thanks for Thank you, very ma'am. much. Thank you, CPSP. Thank you so much. On behalf of CPSP and Program Director, Dr. Shahid Parvez, I'm very thankful to you for your participants, and the facilitators were very helpful to us. And we always started the program on time. That is the main purpose of the program was at 9, so 9 was sharp with us. And we finished at 1:30. So it was really good experience. Still, I would say, please brief summary of the feedback as soon as possible for our strength and any weaknesses, whatever you find out. So it will help us for the next program. So thank you so much. Wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much. सब लोग Thank पास you. हो जाएं और हमें दुआओं में Thank you, याद Madam रखें, हम भी Siddiqa. आपके लिए दुआ करेंगे जरूर जरूर मैम. इंशाल्लाह। Bilkul. We need Inshallah. that. We really need Thank that. you, Thank ma'am. you. Very Harsh. excellent Thank session. you. Thank और you, any, beta. you have my Thank you, ma'am. कभी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन मेल मी। मैम Yes, कराची madam. आके आपसे मिलना है मैम. बड़ा हाँ अच्छा जरूर टाइम स्पेंड जरूर हुआ आपके विच- साथ और जरूर इंशाल्लाह मिलेंगे। कभी कराची आना हुआ तो I will definitely try to meet you in any way. जरूर आए, फिर मेरी तरफ से आपको दावत भी है। Madam, part 1 clear होगा फिर Ma'am, आप फिर हम दोबारा कब दोबारा आएंगे? आएंगे। जरूर जरूर आए इंशाल्लाह। पार्ट 1 क्लियर होगा We'll फिर have आएंगे dinner- आपके we'll have साथ dinner फिर with आएंगे, you। madam. इंशाल्लाह हम एक डिनर करेंगे सबके साथ Yes, इंशाल्लाह ma'am. मैम. Inshallah, जरूर. अल्लाह इंशाल्लाह Thank you, ma'am. Thank you. अल्लाह आप बहुत लोगों को शुक्रिया खुश मैम. रखे, अस्सलाम Madam, कामयाब। last में एक group picture हो जाए. God bless you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दुआ में Thank you, याद madam. रखिए। Ameen. अल्लाह आप Thank you, लोगों को ma'am. पास करे, Allah Hafiz. Ameen. आप Ameen. लोग सब शाद रहे, आबाद रहे, खुश रहे। Ameen. चले, अल्लाह Thank you, हाफिज। madam. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. उन्होंने कल ऑन की थी तो उनकी हम तस्वीर ले लेंगे, ली है तो प्रोबेबली विल पुट इन द बुलेटिन।